नेशन नाउ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप नाम्बियार और आज बात करते हैं अबाउट द ड्रग गैंग्स दैट इज कंट्रोलिंग ड्रग ट्रेड इन मुंबई। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने 14 ऐसे गैंग को आइडेंटिफाई किया है। मेनी ऑफ देम द गैंग लीडर्स आर बिहाइंड द बार्स। दे आर सम। आज हम बात करते हैं बटाटा गैंग के बारे में। We'll talk about how the enforcement agencies got the Batata gang behind the bars now. In human cycles, years, sometimes centuries pass as wayward time. And then comes a moment marked by growing consciousness that an era is emerging and that mankind is moving in a new direction. Humanity today is restlessly groping its way to the unity of mankind. Not only the unity of mankind, but also how are we going to preserve the future generations and keep them away from drugs. Narcotics is going to kill our youth. We need to protect them. We had some enforcement agencies who really acted on these people. One of them is NCB. On 25th of March 2021, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बटाटा गैंग के बारे में। 25th of March 2021 को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से एनसीबी के ऑफिसर्स ओशिवारा अंधेरी वेस्ट में एक घर पे स्वूप डाउन करते हैं। शाहरुख अशरफ खान उर्फ शाहरुख बुलेट के घर पर रेड होता है अंडर इंफॉर्मेशन दैट ही इज होल्डिंग नारकोटिक्स ड्रग्स बैंड बाय एनडीपीएस। वहां एनसीबी ऑफिसर्स को सरप्राइजिंगली और नॉट सरप्राइजिंगली 1.96 kgs ऑफ एमडी, नियरली 2 किलो एमडी मिलता है। 1.15 lakhs cash. They impound a Fortuner car, a Hyundai car. This was in the house of Shahrukh Bullet, whom they call Shahrukh Ashraf Khan. शाहरुख अशरफ खान के इन्वेस्टिगेशन जब होता है, अशरफ खान टॉक्स अबाउट अनदर पर्सन, शादाब फारूक शेख उर्फ शादाब बटाटा. Now we are talking about the Batata gang. This is one of the 14 gangs that controlled drug trade in Mumbai. And though the gang leaders are still in jail, but the drug trade is still on in the posh areas of Andheri West, Juhu, and you can say the posh western suburbs. तो after शाहरुख बुलेट के घर पे रेड होता है, इंफॉर्मेशन मिल्स आउट अबाउट शादाब फारूक शेख यानी शादाब बटाटा के घर से एनसीबी गेट्स 61 grams of MD, mephedrone, 160 grams of ephedrine. Now when we talk about this synthetic and chemical drugs, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिंथेटिक एंड केमिकल ड्रग्स, एमडी, मेफेड्रोन, एब्सोल्युटली डेंजरस। एमडी बहुत डेंजरस है। सिंथेटिक वीड जो बोलते हैं, हमारे जो वीड होता है उसके एक सिंथेटिक हिस्सा बनता है, वीड, सिंथेटिक वीड, दैट कॉल्ड K2 स्पाइस। मेथाम्फेटामाइन, मेथ, एब्सोल्युटली डेंजरस। मेथाम्फेटामाइन, LSD, लाइसर्जिक डाइथैलेमाइड, एब्सोल्युटली डेंजरस। ये सब सिंथेटिक ड्रग्स। LSD, आप LSD की बात करोगे, उसके बाद MDMA, एक्सटेसी, पिल्स आता है, क्रिस्टल्स आता है, एब्सोल्युटली डेंजरस। MDMA और एक्सटेसी, वेरी डेंजरस। एफेड्रिन, इट्स कॉल्ड रिच मैन्स ड्रग, एफेड्रिन। एम्फेटामाइन, ज़ॉम्बी, आप देखो 8-9 वैरायटी के ड्रग्स इजीली अवेलेबल, जो सिंथेटिक ड्रग्स है, केमिकल ड्रग्स है, सो इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, एंड दैट इज डिस्ट्रॉइंग आवर फ्यूचर। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ऐसे ड्रग्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये आप सुन लो। भी लोगों में जागेगी। कोई भी क्राइम, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, चाहे वो कमर्शियल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो या फिर कंजम्पशन क्वांटिटी हो, इट इज़ अ क्राइम अंडर एनडीपीएस एक्ट। अगर आप कंज्यूम भी कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कंज्यूमर को क्राइम नहीं, सज़ा नहीं होती। इट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है।
तो हर क्राइम इज़ द सीरियस क्राइम ऑफ ऑफ एनडीपीएस। उसके अलावा भी आप का सेवन कर रहे हैं, आप गांजा का सेवन कर रहे हैं, या कोकेन, मैथ, एमडी का कर रहे हो, मेटाम्फेटामाइन का कर रहे हो, इट इज़ अ क्राइम। आप ये नहीं कह सकते कि नेचुरल है, चरस है, गांजा है, नेचुरल है तो ये क्राइम नहीं। नहीं, इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम विच इज़ लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज विद पेनल्टी। सेकेंडली, जब भी हम इस चीज़ का सेवन करते हैं तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में जा रही है। हमारी बॉडी हमारा एक टेम्पल है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसे ठीक से टेक केयर करें, ना इधर की एक गंदी चीज़ हमारे बॉडी में इस चीज़ के सेवन करें। थर्डली, अभी ये जो आपने यूथ की बात करी, स्टैटिस्टिक कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स आर बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35। तो ये हमारे यूथ ऑफ द नेशन है, जिसकी संख्या काफ़ी 60 to 70% है क्राइम में। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा है। एंड जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यूथ की वजह से नेशन डेवलप होगा, यूथ की वजह से ही आगे जाएगा, ना कि ये चीज़ों में, गलत चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, ये गलत सेवन कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी, यानी खुद को भी हार्म कर रहे हैं और देश को भी हार्म कर रहे हैं। अभी अगर उनको नेशनल बिल्डिंग कर रहा है तो ये बच्चे भी अपने आइडल अच्छा रखें, ना कि अभी ये भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सोशल मीडिया पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स को पीपल ट्राई टू मेक आइडियलाइज देम, दे फॉलो देम। ये काफ़ी रॉन्ग प्रथा चल रही है। तो मेरा यही मानना, पर्सनली माई व्यू वुड भी, कि आइडल बनाए कैप्टन विक्रम बत्रा की तरह, कैप्टन अनुज नैयर की तरह, जिन्होंने देश के लिए जान दिया जब ये 24-25 साल के थे। ये आइडियल होना चाहिए, ना कि दीज काइंड ऑफ एंटी सोशल क्रिमिनल्स हु आर एक्टिंग एज इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल। Yes. To the Romans, justice was a goddess whose throne tempest could not shake, whose passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. After the raid at Shahrukh Ashraf Khan's, that is Urf Shahrukh Bullet के घर में रेड होने के बाद शादाब बटाटा यानी शादाब फारूक शेख के घर पर रेड होता है, एंड आफ्टर दैट दे फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजाज खान. Now, Ejaz Khan is a very controversial kind of person in Bollywood, Tollywood, and most of this filmy area. Ejaz Khan सुर्खियों में हमेशा रहता है. They raid after शाहरुख बुलेट, शादाब बटाटा के बाद रेड होता है एजाज खान के घर पर, and there they get banned drug, tablets. तो इस टैबलेट अल्प्राजोलम टैबलेट्स जो मिला है एजाज खान के घर पे मिलता है, और एजाज खान को 30 तारीख को 30th of March द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टेक हिम अंडर कस्टडी. नाउ यू अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट बटाटा गैंग. ना आप देखोगे जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने 14 गैंग के बारे में जो बात की है, जो मुंबई के ड्रग ट्रेड को कंट्रोल करता है. इकबाल खासकर गैंग, चिकना गैंग, बबलू पटरी गैंग, पठान गैंग, सुल्तान मिर्जा गैंग, करमजीत गैंग. करमजीत गैंग वो गैंग है जो पूरे बॉलीवुड को सप्लाई करता था, और सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर में बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट था, सप्लाइंग टू द बॉलीवुड. करमजीत गैंग. द 7th was called the hydroponic weed gang. Arshad Javed, hydroponic weed gang. Azam Chumman gang, Tiger Mustafa gang, Bhandari gang, Batata gang, Zaid Rana gang, Sam Langda gang, Azim Bhau gang. Now the first Iqbal Khaskar gang, और जो लास्ट हमने बोला अजीम भाऊ गैंग, हैज मोर प्रोमिनेंस बिकॉज दे आर रिलेटिव्स ऑफ द ड्रेडेड इब्राहिम दाऊद. तो ये 14 गैंग्स, दे हैव गॉट द क्लचेस ऑल ओवर मुंबई, और आज के तारीख में इनको रोकना उतना ही जरूरी है. एडवोकेट तरक सैयद एजाज खान के लिए बेल के लिए अप्लाई करते हैं, एंड ही सेज द क्वांटिटी गॉट is absolute minimal, small quantity है, तो rigors of NDPS Act शायद इस पर लागू नहीं होता. एनसीबी ने जबरदस्त विरोध किया. एनसीबी ने घर से किस प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने मंगाया था, जो टैबलेट्स मंगाए थे,
वो प्रिस्क्रिप्शन को चैलेंज किया, उस डॉक्टर का स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड किया बिफोर अ मजिस्ट्रेट। डॉक्टर ने कहा कि ये प्रिस्क्रिप्शन हमने नहीं बोला है, ये प्रिस्क्रिप्शन हमारा नहीं है। एंड लुक एट द अगर इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इफ दे वांट टू स्टॉप द ड्रग ट्रेड, नथिंग कैन स्टॉप देम। लुक एट द इन्वेस्टिगेशन, प्रिस्क्रिप्शन का वैलिडेशन करता है और उस प्रिस्क्रिप्शन नकली निकले। We found the prescriptions are faulty, and that was presented before the court, and the honorable court took a very serious matter of that. कहा कि अगर प्रेस्क्रिप्शन गलत है, एक बड़ा ऑफेंस है। इट इज नॉट द क्वांटिटी जो पकड़ा है, राइट फ्रॉम शाहरुख बुलेट, शादाब बटाटा, उसके बाद एजाज खान, और उसके बाद नकली प्रेस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने खुद सर्टिफाई कर दिया कि ये प्रेस्क्रिप्शन हमने नहीं दिया है, बेस्ड ऑन विच, in spite of a fantastic argument by the defense counsel, Tarak Sayyed, and NCB's brilliant opposition of the bail stand rejected Azaz Khan. He is still languishing in the jail from 30th of April, 30th of March. Now the biggest dangers to the youth of today, चाहे वो small quantity हो, intermediate quantity हो, या commercial quantity हो, NDPS Act is absolutely strict about it. Absolute strict है. Enforcement agencies इसके बारे में क्या कहते हैं सुनिए. The introduction of MD is one of the worst things that could happen. Okay. It is a very cheap drug. Okay. It is very easy to manufacture. All right. Therefore, there are people in their residence, in their houses, in outside the outskirts of the city, Yes. who have taken small places and they are manufacturing this drug. Yes. It is very harmful. It is absolutely poisonous. It is Okay. poison. Okay. But to try and eradicate it completely, I think it's a tough ask, because there are too many people who have got addicted to it, and surprisingly, it is people who are aged above 30 years. Oh. If you see, it's not the younger generation who is consuming MD mostly, but there are a lot of people in village, which is very wrong, which we believe at that age a person is matured enough to understand what he's doing. But the fact remains that it is so easily available, and there is a huge amount of profit involved in it. So therefore, to eradicate that completely will be a tough ask for all the enforcement agencies. Our constitution, the preamble says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. आज हमने बटाटा गैंग के बारे में बात किया. Is one of the 14 gangs that controls drug trade in Mumbai. हमें जैसे preamble ने कहा, we have to enjoy our liberties, but also have the cast iron guarantees of the constitution that will protect the youth of the future. हमारे जो आज के नौजवान हैं, जैसे enforcement agencies कहते हैं कि they are the future of tomorrow. You need to protect them. And it's not only the country's and every individual's responsibility to see that we gather together, come together to stop this kind of drug menace. This particular menace of drugs have to be stopped. We need together to fight it. हमको enforcement agencies के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा इस चीज को रोकने के लिए. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now. We'll further discuss the 14 gangs that control drug trade in Mumbai. Now, that's all.